हेलो गाइस, तो आई होप मई 22 का पेपर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। टुडे वी आर डूइंग दिसंबर 21 पेपर। यस, दिस इज दिसंबर 21 पेपर वी आर डूइंग इट। तो यू कैन सी दिस दिसंबर 21 पेपर। इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंपलसरी है। तो अगेन वी विल डिस्कस 12 मार्क्स ट्रू फॉल्स विच इज कंपलसरी एंड 4 मार्क्स थ्योरी। फर्स्ट, एनी अमाउंट स्पेंड टू मिनिमाइज द वर्किंग एक्सपेंसेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले इसको क्वेश्चन को समझो। वर्किंग एक्सपेंस क्या होते हैं? डे टू डे के खर्चे। डे टू डे के खर्चे आप तभी कम कर सकते हैं जब आप कहीं ना कहीं मशीनरी की एफिशिएंसी बढ़ाएं। आप पहले मैनुअल काम करते थे, अब आपने मैकेनिकल काम कर लिया होगा, आपने बड़ी मशीनें लगा ली होगी, आपने अच्छे कंप्यूटर्स लगा लिए होंगे। पहले स्पेस कम था, आपने बड़ा स्पेस ले लिया होगा, तभी तो वर्किंग एक्सपेंस कम होंगे ना आपके। इसका मतलब ये खर्चा जनरली लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का होता है, इसलिए ये खर्चा रेवेन्यू नहीं होगा, क्या होगा? कैपिटल होगा। तो क्या लिखेंगे? एनी अमाउंट स्पेंड टू मिनिमाइज द वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कॉमा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज सच expenses which is incurred to reduce the working expenses always gives the long term benefit. For example, installation of a new machinery, computerization, all these will give the long term benefit, and therefore such expenditure are in the nature of capital expenditure, and thus these expenditures are recorded not in the income statement but recorded in the position statement, that is the balance sheet. Clarity? Expenses incurred on the repair, अगर रिपेयर है तो रेवेन्यू होता, लेकिन देखो क्या लिख दिया, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपके टीचर ने जब आप टॉपिक पढ़ाया होगा तो बताया होगा, जब फर्स्ट टाइम कोई खर्चा होता है तो नई मशीनरी या पुरानी मशीनरी हो, जब तक रेडी टू यूज नहीं होता उससे पहले ये सारे खर्चे कैपिटलाइज हो जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? Any expenditure incurred on the repair for the first time on the purchase of an old building are capital expenditure, comma, this statement is true because such expenditure have been incurred before asset is ready to use or put to use or available for use, and therefore such expenditure will be incurring only one time. For example, if an old car has been purchased and to bring that old car into the working condition, an expenditure has been incurred of, let's say, 10,000 rupees. Now the cost of the car will not be 4 lakh, it will be 4 lakh plus 10,000, 4 lakh 10,000. एग्जाम्पल हमेशा लिख के जहां जहां पॉसिबिलिटी है। क्लैरिटी? नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज डेबिटेड टू सुंदरी डेटर्स, कहता हूं मैं हमेशा, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। नो, this statement is false because provision for bad debts is in the nature of estimated loss and not the actual loss, and therefore the entry is always P&L account debit to provision for bad debts. For example, if a debtor amount is 10,000, bad debt written off is 1,000, the good debtor are 9,000, provision is 10%, 9,000 10% 900, P&L account debit to provision for bad debt to 900. एग्जाम्पल लिख के आइए हमेशा बेटा, सिर्फ 2 लाइन मत लिख के आइए। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयरहोल्डर एंजॉय द वोटिंग राइट्स। अब यहां लिखिए, कॉमा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज voting rights are enjoyed only by the equity shareholders. Non-participating preference shareholders are those preference shareholders which only get the fixed amount of dividend and they never participate in the profits of the company. And therefore, voting rights are enjoyed only by the equity shareholder. And therefore, this statement is false. There is no entry passed by consignee in his book for the remaining stock of the goods lying with him, comma, this statement is true. Because stock की entry कौन pass करेगा? Owner. Because the entry of stock is always passed by the owner of the stock, which is the consignor, and therefore entry for stock is passed by consignor in his book and not the consignor, and the entry which consignor will be passing will be stock with consignee account debit to consignment account. Last, discount column of the cash book is never balanced. कैश बुक के अंदर आपके पास डबल कॉलम कैश बुक होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है। तो दिस डिस्काउंट कॉलम is only totaled and it is transferred to discount allowed or discount received. The discount column of the cash book is never balanced. Statement is true because this discount is total and transferred to discount allowed or discount received. So I hope this will be clear to you.
इस 12 के बाद आपका देखिए 4 नंबर का 1 मार्क का थ्योरी का है, तो ये भी आप छोड़ोगे, बताओ फ्री के मार्क्स, फ्री के मार्क्स। तो अकाउंट्स के पेपर में थ्योरी की टेंशन तो लो ही मत। और 1 मार्क में सिर्फ 1 लाइन अच्छी तरह लिख के आइए। एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन विच रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड व्हेन revenue is incurred and revenue is earned and cost is incurred. It means they're accounted in the period in which they accrue. For example, if cash sales is 10,000, credit sales is 50,000, and if we are recording accrual base of accounting, then our total sale will be 60,000. Finish. Sufficient. Amortization. Amortization is a way of writing off the intangible asset. For example, if patent is written off, goodwill is written off, copyright is written off, it reduces the value of the asset. It is covered by Accounting Standard 26. Then comes the contingent asset, contingent liability. अगर आपको याद हो इसका ट्रू फॉल्स मई 22 में भी आया था, ये दिसंबर 21 हम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं। क्या डेफिनेशन है? कंटेंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कहाँ लिखी हुई? AS 29 में। कंटेंजेंट लायबिलिटी बच्चे क्या करते हैं? अपनी लैंग्वेज में लिख के आते हैं। जो AS 29 की लैंग्वेज लिखो, कंटेंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, बड़ा सिंपल है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट and the existence of which will be confirmed by the future, which is one or more future event which is uncertain, not wholly within the control of the enterprise. कंटेंजेंट एसेट और लायबिलिटी में देखिए एक ही फर्क है, वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ये पॉसिबल एसेट है। कंटेंजेंट एसेट इज अ पॉसिबल एसेट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, सेम लाइन, existence of which will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event, not wholly within the control of the enterprise. बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल लिख के आइए कंटेंजेंट लायबिलिटी का, कंटेंजेंट एसेट का, और कहाँ डिस्क्लोज होता है। मिल गया 1 मार्क्स। बेटा ये 16 नंबर अपने को पूरे लेने हैं, यही मेरा पर्पस है छोटे छोटे वीडियोस बनाने का। तो आई होप दिसंबर 21 का पेपर रिवाइज हो गया है, 16 मार्क्स का कॉन्फिडेंस आ गया है। कीप ऑन वॉचिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन, पंकज गोयल। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो अस ऑन यूट्यूब एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स। डोंट बी ग्रीडी, डू नॉट बी ग्रीडी कि सिर्फ हम लोग रखेंगे। सबका भला करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, इंजॉय करो, टेंशन की जरूरत नहीं है। पंकज सर आपके साथ है। लव यू ऑल।